ऑलराइट। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? हाँ वेलकम टू अनदर एपिसोड। सब ठीक है। आप बताओ। तो आई एम श्योर आप सबने ड्यूरिंग द वीक एक सैड न्यूज़ जो आई है क्रिकेट फ्रेटर्निटी के पर्सपेक्टिव से वो देख ही ली होगी, दैट द मैजिशियन हिमसेल्फ इज नो मोर। रियली रियली वेरी सैड न्यूज़। पर्सनली इट फील्स जैसे कि कोई कोई अपना चला गया है, बिकॉज शेन वॉर्न के बहुत बड़े फैन हैं हम सभी। पर्सनली स्पीकिंग, मैं तो आई थिंक आई वाज फॉन्ड ऑफ seeing him on the field. So on the TV screens, जब भी शेन वॉन गेम में होता था, बी he's playing with India or not, I used to not miss him. So such fond memories I have of Shane Warne. So ऐसा लग रहा है कि कुछ पर्सनल लूज हो गया. So he was, is and will always be a true magician. या रियली रियली सैड न्यूज. मेरे ना ताया जी थे, ही यूज टू बी अ बिग फैन ऑफ शेन वॉन, जिनकी वजह से मैं शेन वॉन को फॉलो करने और देखने लगा. तो वो इसको ना बड़े एक फनी नाम से बुलाते थे, मतलब अपनी तरफ से वो अंग्रेजी में सही नाम ले रहे होते थे बट वो हो नहीं पाता था. वो बोलते थे शरने वरने आ गया बॉलिंग करने. तो जब शरने वरने आता था तो सबको लगता था कि अब गेम ऑस्ट्रेलिया की तरफ घूम जाएगा. तो yeah, such a big loss for cricket fraternity. Not just as a cricketer, there are stories which tells he was such a humble human being as well, and somebody who used to always spare time for his fans. There are so many numerous stories about how he used to spend so much time just signing autographs or taking pictures whenever selfies or whatever came into play. So that was the type of star he was. Has been a bit controversial as well, but I think he has lived the life king size. That is why King is with his name, and he's someone I think, according to me, who has made spin look sexy. And जिसने I think spin को mainstream में ले आया था. Everyone wanted to be Shane Warne, or at least wanted to ball like him or imitate him. मैंने तो certainly बहुत बार किया, चाहे लेफ्ट हैंड से करता था, बट हो नहीं पाता था. Such an amazing guy. I'm sure तुम सबको भी कुछ तो fond memories रही होंगी I उसकी. mean, I'd probably start. Memories से ज़्यादा, I think we brought him up only last week when we were talking about Rajasthan, right? And हाँ, राजस्थान. how instrumental he was to win the IPL with Rajasthan. And I think we gave a lot of credit to his leadership skills. So obviously, that is going to be missed above all, right? More than a cricketer, you've lost a very good human being. Um, I still have, I know, ball of the century, Shane Warne, awarded है. My personal memory, a couple of instances जो मैं बात करूँगा was, I think, एंड्रू स्ट्रॉस का विकेट, बिकॉज ओबियसली जब वो बॉल ऑफ द सेंचुरी हुई थी, मैंने मैच ऐसे लाइव नहीं देखा था, बट आई वाज एक्चुअली वाचिंग द एशेज जब वो स्ट्रॉस का विकेट गिरा था. तो दैट इज लाइक मेस्मराइजिंग फॉर मी. अब आज भी हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो ना हम ऐसे खुश हो जाते हैं, राइट? एक बार कभी हमने गलती से बैट्समैन के पीछे से बोल्ड कर दिया हो किसी को, तो इतनी एक्साइटमेंट होती है, इतनी खुशी होती है. एंड ही इज डन इट लाइक सो मेनी टाइम्स. आई वाज जस्ट लुकिंग एट अ ट्रिब्यूट वीडियो in which इसके विकेट्स आए हैं, स्पेशली द वंस which is coming around the leg or which has spun so much and hit the stump. It looks mesmerizing. I think it used to be said the leg spin is it was a dying breed before Shane Warne Correct. came in. And the stats itself speak for it. He was blockbuster, right? I mean, not just as a cricketer, him being on the field. I think एक और इंस्टेंस की बात करूं तो I think he came back to Big Bash and he was all mic'd up and he predicted what Brendan McCullum is going to do and what he's going to bowl and get him out, right? Over the mic, and he did that. Just shows कि cricketing mind इतना genius था. And I think he just posted 12 hours ago for Rod Marsh, and this happening to him हाँ. was very unfortunate. So I think it's going to be a big miss. I'll personally miss because even Seriously after यार. after his cricketing life, he used to be in the
commentary box or his off-field banters especially with the English team. So I think I'll definitely miss that. हाँ एब्सोल्युटली यार, जो तुमने लीडरशिप की भी बात की इन द बिगिनिंग, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ही इज वन कैप्टन व्हिच ऑस्ट्रेलिया नेवर हैड, सो आई थिंक that's how I will sum it up. Truly amazing. आई थिंक मेरा भी वही पॉइंट था कि उसकी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद उसको ऑस्ट्रेलिया में कभी कैप्टनसी का चांस नहीं मिला. बट खैर उसके स्टैट्स वगैरह तो अमेजिंग है. हम सब ने बचपन में उसका स्टाइल कॉपी करने की ज़रूर कोशिश करी है, मतलब मैंने तो करी है. एंड हर गली मोहल्ले में जो भी अच्छी लेग स्पिन डाल देता था उसका नाम शेन वॉर्न रख देते थे. ठीक है, तो आई थिंक वो तो लेगेसी उसकी हमेशा रहेगी. इवन मुझे यहाँ तक याद है शारजा जब सचिन ने उसको बुरी तरह धोया था लेफ्ट राइट एंड सेंटर. एंड आई थिंक उस सीरीज में आई थिंक ही वेंट बैक टू सचिन और उसने बोला था कि बहुत अच्छा खेला, यू प्लेड क्वाइट वेल. मतलब इट्स अ टेस्टमेंट कि ही वाज अ वेरी नाइस जेंटलमैन लाइक ऑफ द फील्ड. मतलब जो भी फील्ड में हुआ, लाइक मेरे को कोई 4 छक्के मार दे तो मैं बात नहीं करूँ एक दो हाँ, हफ्ते तूने तक. मेरे से बात नहीं की. Right. I think जो डीडी ने अभी बोला ना, I was hearing Nasir Hussain also talk about Shane Warne and he mentioned this. So obviously it is not like a one-off instance कि सचिन के साथ एक encounter हुआ and he went back saying you batted really well. Obviously he knows that he is good, right? So if he sees some talent or somebody batting very good on the field, he was like, I think, one of the greats in the sledge master Australian team that we had in the 90s, right, and the early 2000s. But I've heard that he used to do that very often कि कोई अगर उसको अच्छा खेला, he used to go backstage kind of and tell them that you did really well. So I think that shows his sportsmanship and his competing. Yeah. And also love for the game. Like eventually whatever happens, उसको मतलब he was passionate about cricket a lot. I mean उसी का क्या बोल सकते हैं, मेंटी है रविंद्र जडेजा जिसने कल 175 मारा है. Like how he has grown. I think Shane Warne ने predict किया था कि he was a rock star, right, for him. And see after like 10, 11, 12 years he's reaping the benefits of that kind of leadership. So yeah, it's a big loss for cricketing world. Exactly यार. उसने आज फाइफर भी लिया जडेजा ने, tributing to his all-round skills and how Shane Warne predicted or gauged that in the very early days of Rajasthan Royals. ऋषभ, वही आपके जो दो तुम शब्द. लोगों ने बोला, बचपन से ही जब भी कोशिश करी है कोई, मतलब हम खेलते थे और स्पिन नहीं होती थी तो पीछे से आ जाता था कमेंट, बड़ा अपने आप को शेन समझ रहा है. और तो वही एक्शन कॉपी कर करके बड़े हुए हैं तो बहुत ज्यादा रिलेट. और वही जो पहले तुमने बोला कि ऐसा लग रहा है कोई फैमिली से कोई बंदा गया है, इतना ज्यादा हमने उसको बड़े होके धोते हुए देखते हुए देखा है कि एब्सोल्यूट इट्स अ लॉस टू एवरीवन. तो या बिल्कुल यार, जो तूने बोला ना, मतलब आई थिंक वो गिलक्रिस्ट के और एन हीली के शब्द हमेशा ना रेजोनेट करते रहते हैं कान में. जब भी ये बॉल करता था पीछे से बोलते थे बॉलिंग शेन, और ये हमारे मोहल्ले में भी होता था. आई थिंक हम सब किसी एक दोस्त शेन वॉर्न को तो जानते ही हैं जो कि अपनी अच्छी लेग स्पिन कराता था, और हम सब उसको जैसे ही कोई बॉल अच्छी हो गई या उसने विकेट ले लिया, वी शुड यूज्ड टू से वाह बॉलिंग शेन. So yeah, I think that legacy is going to live forever and ever. He may not be with us physically, but I think he is a legend of the game and a very humble personality. I think his magic is going to live forever and ever and ever. So yeah, rest in peace, Warney. We all miss you.